Hello. The drop catch was celebrated. It was in the air for a while. Players at covers and extra covers just were not able to judge the ball and go for it. Shafiq created an opportunity. Could have been the first wicket in a power play for Kasauli Tigers. A loud, loud cheer from the dugout. A steady start from Mavericks as well. Uh, Good thing for them. They haven't lost a single wicket in a power play. Plays onto the back foot. Rotates the strike. Kasauli Tigers would be thinking what could be the best possible bowling option they can introduce to get a first breakthrough. Oh, should have converted that. A long on and a deep square leg has been placed outside 30 yard after 6 overs, 41 for the loss of no wicket. Shafiq Shah bowled a good first over, just given 5 of that over. No trouble so far for Mavericks. Both the openers looking in a good touch.
Now from here on, in the middle phase of this game, of this innings, they have to make sure that this run rate climbs up a bit and they give a good chance. Again, an off spinner has been introduced, so wanted to cut the shot, failed to do so. Nilay away is a new bowler in. He wanted to play onto the back foot. This time he gets a single. They need to break the shackles and go accelerate the pace of the innings. Mavericks, the best part they have done from their end is to not lose any wicket. Bit of a shorter in length, still manages to get a single. It was timed very well by Sukamal. And why couldn't he? He has played 20 balls. Set batsman, oh, quicker in the air. Oh, he should have bent a little bit. These single runs may prove them costly in a second innings. Every single run matters at this stage of the tournament. Very well. Bit of a flighted delivery in the air. Took the pace off from the ball. This time Tukamal makes no mistake and clears the boundary rope. He, he had anticipated that shot. He was expecting the same delivery, more or less same, and he gets first boundary in this over. 50 up for Mavericks after 7 overs gone. 50 for no loss. The over was looking good from Nilay, but Sukamal, just when it was into the slot, he dispatched it out of the boundary rope. Perfect end to the over. Shafiq will continue, or 5 players have been placed outside now. Shafiq from the different end. Oh, there was a call of two, but batsmen have different mind. Both the batsmen are playing a steady innings so far. Wanted again a good pull shot. A poor fielding from the boundary player. Yes, it's a boundary without a shadow of doubt. That's a poor effort from the player at a deep square leg. And Sukamal now finding his rhythm. He's changing the gears of his innings.
rotates the strike immediately after that boundary, gets off the mark, gets off the strike, beg your pardon. This is that phase of the innings where you have to construct your innings smartly. You don't have to lose so many wickets, otherwise, it becomes difficult for a batting team to make a comeback. And at the same time, a bowling team has to make sure that they at least clinch 2 or 3 wickets, important wickets, sensibly played onto the back foot in the regions of point. In the air for a while. This time the player is underneath it and he manages to take the catch. A good catch. It was in the air for a while. And just when Sukamal Narang was looking to accelerate his innings, he loses his wicket. So first wicket for Kasauli. It will be celebrated, especially after that confusion in power play. An easy catch was dropped. A good innings from Sukamal and round of applause. It just got twisted in at the very last moment. As a result, he wanted to play it over the covers. New batsman is in his Kshitij. 57 for loss of 1 after 8. So first breakthrough in the middle phase of the innings. This will help them to get back into this game, rethink about the strategy, and then one or two more, they'll be right back into this game. In fact, at which the run rate Mavericks were scoring, they were never out of the game, but they had 10 wickets in hand, and now they have 9. So a wicket brings back the momentum as well as the ray of hope that one can bring two, two can bring three. It was kind of a hit the deck bowling from Nilay. Rizwan Ansari has a big role and big boost to fill in now. He's the one out there who is already set. He is the one out there who have to take the responsibility to keep the scoreboard ticking. And Kshitish plays onto the back foot.
Slight delivery wanted to go for a big, but he was not able to make it so. It didn't time well into the hands of a deep mid wicket for a single, and Kshitij gets off the mark. Again, a single to end this over, and a good over from Saurabh Limay. So a new bowler in is Kalpesh Kori, a medium pace bowling option. Oh, it just skid off from the pitch and right from the good length. A good looking bouncer. It will create a doubt in a batter's mind now. He must have sniffed the grass on the ball. Again, a bit of the shorter length delivery. The poor calling should not have happened. Late calling from either of the batter. Certainly not a wicket which Mavericks wanted to lose. He was looking in a good touch. The second wicket. So drinks break has been taken. 60 for the loss of two now. A new batter in is Siddharth Barot. Wanted to a tennis ball shot from Kshitij. Ball was bit on the shorter length. He just hammered it over the covers.
Three continuous short balls from Kalpesh, out of which one was a jaffer, second one he got a run out, and third one takes the leading edge. A much welcome boundary for Mavericks and as well as for Shitij. Right after the six, he has managed to get a boundary. काय बोलतोय पिंग 10 of 2. 2671 का Just when आउट बोलतोय आउट there were two immediate quick wickets were fallen back to back, a spark has been displayed by this batter. आउट बोलतोय ना आउटपुट Change in हा field माझ्याकडे now. 3000 काढू Point has been replaced. He has been introduced to a backward point. A gully region player is already 3 there. मध्ये बरोबर क्वालिटी येते सर बोलला काय Flicks it, but for a single only. They don't have to be in hurry now. They have already scored 10 in this over. तू किती बोलतोय सारा 7-8 Comes round the wicket. Opens the face of the bat. Plays smartly. Bisects the player at a gully. Backward point. And founds the boundary. Siddharth Barot gets off the mark with a boundary. After 10 overs, 75 for the loss of 2. A loud cheer from the dugout of Mavericks. So this pair, both of them have shown what potential they have, what they can bring to the table, and how effective they can be in this middle phase, middle overs. So far, so good for Mavericks in last over. Not to forget, Kasauli had a powerhouse in their team as well. Not one, not two, but many. Change of ends. A third man, short third man, a point player into a range, but directly into the hands of a long off player. Just when everything was going good for Mavericks, a good send off, a friendly send off from Arjun to Kshitij. He must have been disappointed with himself. He was looking excellent, especially after that shot over the covers, which went for the six. He was looking into an exceptional touch, but hard luck. A quick fire 12. It just fizzled out. A sparkler, which was sparkling very good, but it fizzled out very soon.
third wicket have been lost. After 10.175 for the loss of three, Saurabh Limaye gets his first in this match. It was a longer boundary rope. It is not easy to clear the straight boundaries here at Central Railway Ground in Parel. New batter in is Pratham Shetty. An altogether new pair on the ground for Mavericks. Oh, it just stopped a bit. He played a bit early, committed too early on the front foot. He gets off the mark with a single. If Kasauli somehow manages to get this man, they'll be all over the Mavericks. A good defense, a solid defense from Siddharth. Plays onto the back foot, cuts it hard. There was a sleep position there. Such was a pace behind the ball. Must be a dropped catch counted. Again plays onto the back foot, but this time he cuts it nicely. A deep point player is pretty much aware, gets a single off this ball. बहुत बढ़िया 11 overs gone, 81 for a loss of three. A point player, a backward point has been asked to go outside a 30 yard, and a point has been introduced inside a 30 yard. He was not prepared. A new bowler in is Mayank. Oh, a good pace, but
with not a control line and length, concedes the extra at the first ball of his new spell. In his first spell, he proved out to be economical. He bowled just one over, gave 2 runs, again hitting a good line and length with a good pace. If he keeps on doing this, he certainly can create a trouble for the batters out there, especially when, especially how the pitch is behaving. Again, शाबाश यार दीप भाई बहुत अच्छे हैं शाबाश शाबाश plays onto the back foot, hit the deck, kind of a bowling from Mayank. His action is a bit of a round arm, opens his body to generate the pace behind the ball. Oh, good looking Yorker. Batsman had no answers. Oh, good looking bouncer. चलेगा चलेगा चल बराबर है That's a 4 dot balls in this over. He has certainly mounted a pressure on both the batters with his exceptional bowling so far. Again, he's able to generate a good bounce, even though it's a wide. I must say, if he's getting his line and length right, he's going to create a trouble, and wicket is not far away. Plays with the straight bat, but again, a dot ball. Off spin option into the attack. Again, he wanted to cut the ball. He's, he has stopped the ball. It's a bit of an awkward fielding. He was not comfortable stopping that ball. Player at a backward point. So it's been 2 times in this innings. He wanted to go for a cut shot, Siddharth, but finds a leading edge, and the ball travels down to a third man region. At first instance, he was lucky to get a boundary. It's looking, if he
took some time, but he finally gave a decision that yes, he was found right into front of three stumps. It looked absolutely plumb to me if there was not height involved or not a bat involved. Batsman has a different opinion. He's not happy with the decision going against him. So Mavericks are looking into trouble right now. 85 for the loss of four. New batter in is Yasha. Oh, he's able to generate a bounce due to his height. There was a big appeal again. He's bowling an exceptional over. Saurabh Limay is quick in the air, varying his length smartly, making his batsman think again and again. 85 for a loss of 4 after 13. Again, an off spin option has been introduced in the front of Siddharth. Plays it with the straight bat. He'll take his time, and so should he. The way the things have gone in last 2 or 3 overs, a certain shift of momentum in a favor of Kasauli Tigers. Plays onto the back foot for a single, rotates the strike, brings Yasha back onto the strike, who is yet to get off the mark. What this has done is Kasauli Tigers have kept Siddharth Barrett quite so far. It's a full toss. Ball racing down towards the boundary rope. Makes the most of it. He gets careful, gets off the mark with the boundary. Good full toss converted for a boundary. Picked his field. Shafiq, an off spin bowling option.
It was a good ball right into the slot, but 13.5, 91. We have seen before, it's not a pitch where you need to score 200, 160 or 170 odd runs will be above par total on this face in on this surface. 91, 91, 14, last six. So Alpen Tara. if anyone can send a message from dugout that you don't have to go for a big in each and every at on each and every ball, but you have to make sure that you you stay the, you stay there till the end. Make sure that there is no further damage done by the bowling team. More deeper, you have to keep playing. You have to take this inning a bit deeper. Kalpesh. Dile, dile. Dile. Altı içine. Bağırana. Altı içine. Mind games from the dugout of Mavericks and as well as from the Kasauli as well. So anything above 160 odd or 170 odd runs is a good total here. That's what I feel. Group, 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 group. वो भाग रहा अभी भी. What is the procedure to change the team, sir? Yes, What is the procedure? a single to start off with in this over. फिर तो मैं उधर ही ठीक हूँ जिधर हूँ. Plays onto the front foot. An interesting choice, Nilay Dave. Last 6 overs are going to be very crucial from the Mavericks' perspective. He shuffled a bit. He wanted to go for a big, but he didn't time it well. As a result, only single run he manages to get, get. Please let, but there is a protection down there in a deep. He wanted to go and to bisect the player at a backward point and a point region. Siddharth. Nilay away. Good over so far. And a good appeal, a big appeal for stumping. An excellent over, keeping circumstances in mind. After 15 overs, 95 for a loss of 4.
From here, they need 70, 65, 70 odd runs. Plays onto the back foot. It's spun in. A sharp turn from Saurabh. His bowling is last over. He has bowled exceptional so far. Brilliant, brilliant bowling from Saurabh. A leg spin over the covers, and we are waiting for the signal from the umpire. The six, Siddharth Barod gets his first six of his innings. Again onto the shorter end, plays onto the back foot, to deep point region for a single, rotates the strike, brings Yasha on the strike again. He's playing with the batsman mind. Just when batsman was thinking of charging in, darted the ball in onto the pads again. Deep square leg. Comes into the act. Siddharth Parot is back onto the strike. Cuts and cuts it hard. A good fielding from the player there at the deep point. And couple of runs. Saved couple of runs for his team. Certainly Mavericks are looking to turn the tide from here onwards. So Saurabh Limaye completes his 4 over spell, 4 overs quota. He gave 20 runs, an economical over, an economical spell from Saurabh, and clinched 2 important wickets for his team. Then a short ball into the air. A sleep player comes into the act, and a new bowler was introduced. He manages to get a first wicket. Nihal Gaikwad in his new spell. Bowled a short ball.
Bala is a new batter in Bhalchandra Sadhav. He needs to do one thing. He needs to give as much as possible to Siddharth Barot, who has shown what he can do in his previous over. A six over the covers, a good cut shot, which almost ran down toward the boundary rope, but a good fielding effort by a player there at a deep point made sure that only 2 runs are conceded. So Nihal Gaikwad in front of Bhalchandra Jadhav. Bala. Again a short ball. This time it will be called wide. Also one for the over has been called. हाँ भाई वो लकी हो गया कीपर अच्छा है हाँ बहुत अच्छा है अच्छा है नहीं तो फिर अर्जुन कीपिंग करता तो वो बॉलर को बोलते क्या बोल डालते हैं A good looking cover drive. And what a way to get off the mark. Cover drive certainly will increase the morale of a batsman and will affect the morale of the bowler. He has announced his arrival. Bala, jersey number 10. Loudly cheered in a dugout. This cover drive was loudly cheered in a dugout. Plays onto the back foot. Sensibly rotates the strike. And what it does is, it's, it brings back Siddharth Parot onto the strike. If he stays there till the end of the innings, they could fancy anything about 150, 160. Going down the leg side. I think that appeal was done deliberately to confuse umpire and to make sure that the umpire doesn't give a wide run, but umpire has signaled it for a wide. Cut shot for a single there. Again, a good looking cut shot, and this time Bhalachandra Jadhav finds another boundary in this over. They were looking for an explosive option, Mavericks. They have find it in a form of Balachandra Jadhav. 2 boundaries so far in his 3 balls he has faced. 9 of 3. What it does is it forces the captain to change the field now. A cover introduced, a point has been shifted towards the palm point region, towards the wide region, and again a single. अरे बैटिंग है अभी 118 for loss of 5 after 17. 40 or 50 odd runs in last 3. And Mavericks will be licking their lips. A good bowling lineup Mavericks have, not to forget the number of power players Kasauli had in their playing 11. A good opening pair,
good firm middle order. Every answer they have in their team will be every questions a bowler might ask. So Sagar Wazirani, left armour to start. That is some good work from the keeper. He manages to get a directed and a loud appeal, but umpire certainly was not interested. Bowling smartly, Sagar. He's again. Bus. Again a white ball. He's keeping the ball away from the reach of batsman. He's not giving easy runs. He's not allowing a batsman gain. Swing and a miss from the batter. Now there is some suggestion coming from the non-striker, and rightly so, because each and every ball will be very crucial from here onwards. Again in the air for a while. Player underneath it, long on, and he makes no mistake. A sixth wicket lost for Mavericks. They loses their sixth, and Kasauli Tigers are right back into this game. They have an upper hand in this game right now, or driving into a driving seat, unless and until something has been done by the batting team. Someone has to take the responsibility from the front. Sagar Wazirani, who bowled exceptionally good in power play, now proving out to be an excellent asset into slog overs as well. Shashank Hegde is a new batter in. Opens the face of the bat and gets the boundary. He knows he just needed something because if he was able to get past the player inside a 30 yard, it was right away boundary. Smart batting from Shashank. It was not a bad ball, but the way Shashank has managed to get a boundary on this ball is commendable. Get into the regions of a deep extra cover. Two overs remaining. Wanted to play a cut shot. Swing and a miss. Kudo
End to the over from Sagar after 18 overs gone, 124 for a loss of 6. New bowler in Mayank. Straight, but the player there. That's a misjudged catch. It was a clear catching opportunity. The player on a long on came all the way down from the long on to towards the. He ran bit straight. He tried to catch the ball with a reverse cuff, but he was unable to grab the ball. And as a result, it went for a boundary. A short ball. Will he able to clear the rope effortlessly? So Shashank Hegde has made sure that Mavericks get above par total and is leading from front. A deep square leg player, Hello. a square leg player is inside a 30 yard. Again in the air, he again manages to clear the rope. He has announced his arrival. He is the man who will bring something to cheer for Mavericks. So next three balls, how Mayank is going to bowl these next three balls. Will he be able to make a comeback? Takes the leading edge. Runs are leaking right now. This is that exact over which Mavericks were looking for. They have one more over left after this. It was not a bad ball from Mayank, but when it rains, it pours. A point player have been asked to go outside a 30 yard and a cover has been introduced inside a 30 yard. In the air for a while. Gets off the strike. Siddharth Parot. So Shashank has scored 26 of 7. That is some power hitting from him. Siddharth. Again a leading edge, but this time there is a player down there. There is some misconfusion. There is some confusion from the keeper. He wanted to go at a non-strike end, but he forgot that there was an opportunity at a keeper's end as well. But by the time it dislodged the bells, Siddharth Barot was well inside.
After 19 overs gone, 147 for the loss of 6. A last entertaining over. We can expect a lot of fireworks in this over. Bowls a slower one. Rolls the fingers. Kalpesh Koi is a new bowler in. Again bowls smartly. He's keeping the ball away from the batter's reach. Some insights from Siddharth, who is watching him from the non-striking end. This time goes down the leg side. One extra run. They won't mind that. At one point, it was looking difficult for them, for Mavericks to get past 150. In the air for a while, plays onto the back foot. A long on region. Player at long on. In the air for a while. A player is underneath it. Again, a straight boundary. A straight six. It was always going to be difficult for him to judge. Three balls yet to be bowled. Two balls yet to be bowled. Beg your pardon. Again, it's here for a while, but this time, the, by the time the long on players get underneath the ball, they'll be able to manage a couple of runs. And now they have put something on a board, at least to put a good fight. All credit goes to Shashank, the way he has batted in a previous over against Mayank. Oh, good way to end his over. 157 for loss of 6. So now Mavericks can fancy their chances, and Kasauli Tigers, they are still very much into this game, but they have to make sure that they capitalize on power play and make this total easy. We'll be back into action in the second innings.
कसौली टाइगर्स उतरे हैं 158 रन का लक्ष्य प्राप्त करने। मैवरिक्स के आखिरी बल्लेबाजों ने एक उम्मीद जताई और अपना परिचय दे दिया पावर हिटिंग के जरिए। एक समय पर ऐसा लग रहा था कि मैवरिक्स का 150 पार जाना भी मुश्किल हो जाएगा, पर बढ़िया बल्लेबाजी हुई शशांक हेगड़े द्वारा और सिद्धार्थ बरोत द्वारा। पहली ओवर जो लेके आएंगे वो यश रहेंगे। ऑफ स्पिन से शुरुआत। अक्सर हम देखते हैं ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसमें ऑफ स्पिनर को जल्दी से जल्दी लाया जाता है। 6 ओवर के भीतर उनके द्वारा अगर एक विकेट प्राप्त करके 6 या 7 रन पर ओवर अगर वो अपना ओवर कंप्लीट कर देते हैं तो उससे बढ़िया चीज कोई नहीं होती। चलिए शुरू करते हैं दूसरी इनिंग की पहली गेंद और वाइड बॉल पे शुरुआत। थोड़ी बाहर रह गई। दर्शन तड़गावकर और मेलचिस पारी को संभालेंगे। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, स्किड कर गई। चाल में भी थोड़ी कमी हमने देखा एक एंड से, जब इसी एंड से निहाल गायकवाड़ और कल्पेश जब गेंदबाजी कर रहे थे तो जिस तरह से उन्हें उछाल प्राप्त हुआ, काबिले तारीफ। दिलेर भरी गेंदबाजी। हवा में थोड़ी तेज गेंदबाजी। ज्यादा फ्लाइट नहीं दे रहे, ज्यादा फ्लैट भी नहीं रख रहे गेंद को जिससे कट मारा जा सके। आगे से बॉल को स्किड करा पा रहे हैं यश शाह। और फिर फील्डिंग में भी ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं पड़ी है। एक लॉन्ग ऑन का प्लेयर है जो बाहर रखा है और एक पॉइंट और कवर का एक पॉइंट का प्लेयर। ये पहला रन। दर्शन तड़गावकर द्वारा अपनी पारी का खाता जरूर खोलेंगे मेलचिस टीम में लोग। स्ट्राइक पर जितना रुक के खेलेंगे उतना फायदा रहेगा दोनों भी बल्लेबाजों को। ये गेंद छोड़ी जरूर पर वाइड नहीं करार दी अंपायर द्वारा। नियंत्रित परी गेंदबाजी यश शाह द्वारा। पटका गेंद को लीडिंग एज, बाहरी किनारा जिसे हम कहते हैं। लीडिंग एज लगने के बाद गेंद तो गई थी रफ्तार से, पर शॉर्ट थर्ड मैन का प्लेयर तैनात है वहां पर। मिड विकेट के प्लेयर को 30 यार्ड से आने को कहा है। गेंदबाज ने पटका गेंद को फिर से और पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद जाते हुए अच्छी खासी पहली ओवर रही यश शाह द्वारा। सिर्फ 2 ही रन दिए, हाथ खोलने का मौका नहीं दिया बल्लेबाज को। दूसरी तरह से भी अगर ऐसी गेंदबाजी हुई, देखिए जैसे बल्लेबाजों में पार्टनरशिप की बात करते हैं, साझेदारी की बात करते हैं, जिसकी वजह से बल्लेबाजी बहुत खूबसूरत दिखती है अगर दोनों एंड से बल्लेबाज रन बना पाते हैं। तो उसी तरह से अगर दोनों तरफा गेंदबाजी नियंत्रित, तेज तर्रार रही, एकदम से सटीक रही, तो फिर बात बनती है। ऐसे तो नहीं चलता कि आप एक बल्लेबाज या एक गेंदबाज सिर्फ आपके टीम के लिए काम कर जाए।
आपको दोनों तरह से उतनी ही एक्यूरेसी की जरूरत रहती है, सटीकता की जरूरत रहती है। और अगर दोनों में से एक भी गेंदबाज थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए तो फिर मुश्किलें बढ़ जाती है गेंदबाजी टीम के लिए। देखते हैं बाला क्या लाते हैं अपने टीम के लिए। अच्छा आउट स्विंगर, नेचुरल आउट स्विंगर है इनके पास। वाइड से शुरुआत, और जैसे ही वाइड डाली उनको पता चला था कि थोड़ा सा दिशा से भटके हैं, और तुरंत माफी मांगी अपने कप्तान से हाथ ऊपर करके। अगर इनके पास नेचुरल आउट स्विंगिंग ऑप्शन है तो स्लिप लगाना, जो कि शॉर्ट थर्ड मैन का प्लेयर है, उसको अगर थोड़ा स्लिप की पोजीशन में लाया जाए तो मौका बन सकता है। पर कप्तान के दिमाग में कुछ मिड विकेट का प्लेयर जो है वो तैनात है। वो जानता है कि अगर अक्रॉस खेलने जाएंगे तो उसको बहुत ही सतर्क रह के वहां पर फील्डिंग करनी पड़ेगी। फिर से हवा में है, पर लॉन्ग ऑन द्वारा लॉन्ग ऑन द्वारा मुझे दिखाई नहीं। इकडे सगळं पेट पहले थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी वहां पर। और वहां पर जो है वो जो है वो अंपायर ने अगर एक अंपायर ने अगर कोई देखा रहेगा तो फिर ये 4 रनों के लिए बहुत ही आक्रामक हो रहे हैं। देना है या नहीं देना है, अंपायर के द्वारा डिसीजन तो, फैसला तो तय कर दिया है। हाँ जी, थोड़ा बहुत जो बादल छाए हुए थे, चौका है या नहीं है उसके चक्कर में कवर्स के ऊपर से इस बार निस्संदेह चौका।
इस बार 4 रन जरूर मिलेंगे। और मेल्चिस जो है वो मेल्चिस के द्वारा बल्ले का मुख खोला। वन बाउंस। थोड़ा सा सुकमल द्वारा अच्छी कीपिंग, लेग साइड के बाहर। 3 गेंदों में 6 रन ऑलरेडी दे चुके हैं बाला। फिर से हवा में है और अथर्व जो है वो कैच पकड़ लेंगे। पहला विकेट प्राप्त हुआ है। थोड़ी सी गर्मा गर्मी है और मैच में जो है वो टेम्परेचर बढ़ता हुआ अभी गेम का। जितने भी न्यूट्रल दर्शक है वो चाहेंगे कि जितना गेम थोड़ा डीप चला जाए और जितना आक्रामक तरीके से खेला जाए। T20 का असल मजा तो उसमें ही है। पर ध्यान रखना होगा कि कहीं दोनों टीमों द्वारा लाइन कहीं क्रॉस ना हो जाए। जो भी मस्ती मजाक करना है उसको नियंत्रण में रह के करना होगा। अर्जुन आएंगे। नए बल्लेबाज जो है वो अर्जुन श्रीवास्तव पहला विकेट तो प्राप्त करने में कामयाब हुए। भालचंद्र यादव 4 गेंदों पे 7 रन दे चुके हैं। 1 विकेट प्राप्त कर लिया, पहले ही ओवर में झटका दे दिया। मैवरिक्स की कैंप में खुशी की लहर दौड़ गई। मेल्चिस के रूप में एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन की दिशा में। पहला बॉल फेस करेंगे अर्जुन। फिर से कवर क्षेत्र द्वारा पर हवे में थी और दूसरा विकेट, दूसरा झटका देने में कामयाब। बल्ले का मुख खोला पर 30 यार्ड के सर्कल को पार करने में असक्षम। दूसरा झटका कसौली टाइगर्स को। बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे अपने आप से अर्जुन। और मैवरिक्स अभी देखेगी कि जितने जल्द से जल्द और 1 या 2 विकेट अगर पावर शॉट के पीछे जो ताकत लगती है वो जनरेट करने में कामयाब नहीं हुए अर्जुन। अभी मानो जैसे नए दोनों बल्लेबाज जो है वो नए हैं। हैट्रिक का मौका बाला के लिए। खिलाया, आगे आने पर मजबूर किया। संदेह निर्माण करते हुए बल्लेबाज के दिमाग में।
तगड़े तरीके से इस ओवर को फिनिश किया। एक वाइड था, एक चौका मिला था, पर अच्छा कमबैक भाला के द्वारा, और 2 विकेट प्राप्त किए। चटकाए 2 झटके देने में कामयाब कसौली को। बढ़िया रहने वाला है ये मैच। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा हमको अलग अलग रंग और रूप देखने मिलेंगे। बल्ले का मुंह खोला, डीप पॉइंट, डीप कवर्स के क्षेत्र में। दर्शन सड़गांवकर, ओपनिंग बैट्समैन, अभी भी वहां पर बरकरार। विडिस, फुल टॉस बॉल था, क्या निकल जाएगी गेंद। वीक फील्डिंग कवर्स के फील्डर द्वारा। झुकना चाहिए था थोड़ा, बॉल को रुकाने के लिए कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर बॉल अगर 30 यार्ड के बाहर निकल जाती है, आउटफील्ड इतना बढ़िया है कि, और स्लोप है थोड़ा, थोड़ा निचले साइड में ये आउटफील्ड जाती है, इसे फिसलन हम कहते हैं। तो बॉल को मदद मिलती है जब वो 30 यार्ड के बाहर स्क्वायर बाउंड्रीज में अगर निकल जाए। पटका बॉल को, और अंदरूनी किनारा, और फिर 4 रनों की बढ़ोतरी। कसौली, भले ही 2 झटके लगे हो, पर अगर बैक टू बैक आपको चौके प्राप्त हो जाए तो फिर आपकी मानसिकता अलग बन जाती है। आप अपने आप अंदर से अच्छा फील करने लगते हो, और फिर आप सोचते हो कि हाँ, ये आज का दिन शायद से मेरा है और मैं उसको बुना सकता हूँ। आगे जाके खेलना चाहते थे, लेंथ को थोड़ा पीछे वाली साइड में रखा यश शाह ने। भले ही 2 चौके खाए हो, पर नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम हिम। बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंदबाजी चली है। देखिए, खिला रहे हैं बल्लेबाज को, और थोड़ा स्टिफ हो गए बल्लेबाज, अपना पैर चला नहीं पा रहे। जितनी मात्रा में चलाना चाहिए उतना तो नहीं चला पा रहे हैं। और बॉल को पटका, फ्लाइट दे दी, और फिर से वही गेंद। बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लगा था। 2 चौके आए थे 3 ओवर के बाद, 18, 2 के नुकसान पर। और पाला जो है वो कंटिन्यू करेंगे, बरकरार रहेंगे, सेम एंड से डालेंगे। निकल आए थे बाहर बड़े शॉट के लिए, पर थोड़ा सा बाहर निकल गई गेंद और करेक्ट नहीं कर पाए फिर। देखिए, अगर जितना ये 6 ओवरों का इस्तेमाल कसौली कर पाए उतना अच्छा रहेगा। और अगर पावर प्ले में ऑलरेडी पहले ही 2 विकेट जो है, 2 झटके जो है वो देने में कामयाब हो चुकी है मैवरिक्स, और 1 या 2 झटके, फिर पावर प्ले पूरे की पूरी तरीके से मैवरिक्स द्वारा जीता जाएगा। पटका, फिर से अंदरूनी किनारा। 2 चौके तो इसी तरह से प्राप्त हुए अक्षय को, और 4 रन जरूर मिलेंगे। मतलब भले ही बल्लेबाज ने वो चौका प्राप्त किया है, पर ये मानसिक रूप से ये गेंदबाज की जीत होगी। अच्छे लाइन और लेंथ पर अगर बॉल डाल के आप अंदर और बाहर निकाल पा रहे हो उस गेंद को, तो फिर ये पावर प्ले जो है वो
चार रन प्राप्त कर लिए। क्यों अपील क्यों की गई? मुझे तो बल्ले का आवाज आया था और सब चौक गए थे इस अपील द्वारा कि अपील किस बात की हो रही है, क्या यार अभी बल्लेबाज बल्ले से भी ना खेले तो फिर किससे खेले। अगर थोड़ी और नियंत्रण से बल्लेबाजी हो। क्या बल्ला लगा था या फिर वाइड थी? नहीं, वाइज। ना बल्ला लगा है ना ही वाइड है। 4 ओवरों के बाद 24 2 के नुकसान पर यश शाह तीसरा ओवर डालेंगे अपना पावर प्ले में। क्विक इन दी एयर जिसे हम कहते हैं, उस गेंदबाजी का परिचय देते हुए यश शाह। हवा में तेज गेंदबाजी। कैच पकड़ने में कामयाब, तीसरा झटका देने में कामयाब। बहुत ही चपलाई से वो कैच को पकड़ा था। जिस तरीके से वो गेंद गई थी और पॉइंट को थोड़ा आगे रखा था, बढ़िया बढ़िया तरीके से कैच को लपका गया। तीसरा झटका देने में कामयाब कसौली को मैवरिक्स। बड़े ही शान से पावर प्ले को अपने नाम करते हुए अभी तक तो। इसके बाद 10 गेंदें बचेगी पावर प्ले की। जितना हो सके कसौली को देखना होगा कि वो उसको कन्वर्ट कर पाए, तब्दील कर पाए मौकों को। क्योंकि 10 गेंदों के बाद जो है वो फील्ड जो है वो बाहर स्प्रेड हो जाएगी। आता- 24 पर 3। इस यार्ड के बाहर अगर कोई प्लेयर है तो एक लॉन्ग ऑन है और फिर एक डीप कवर्स का एक प्लेयर है जो कि बाहर रखा गया है। ओ, इनसाइड एज लगी थी पहले ही शॉट पर। आक्रमण करना चाहते थे, थोड़ा हावी होना चाहते थे।
यश शाह जो है वो रूम अलाउ नहीं करेंगे नए बल्लेबाज को। अगर थोड़ा ब्राइटनेस कर। अटका फिर से गेंद को बैकफुट पे खेला, 1 रन के लिए ऑफ द मार्क। खाता जरूर खोलेंगे अपना। बल्ले पर आ नहीं रही जिस तरीके से चढ़नी चाहिए गेंद, तो थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है अ, बल्लेबाज को। और अगर बल्ले पर आसानी से गेंद चढ़ेगी नहीं तो फिर रन बनाना मुश्किल होते जाएगा। तो जिस तरीके से यश शाह द्वारा गेंदबाजी हुई है, अच्छा खिलाया जा रहा है, अच्छी गेंदबाजी। 3 ओवरों में 12 रन देकर 1 विकेट प्राप्त करना, और वो भी पावर प्ले में। दिलेर भरी गेंदबाजी, सराहना करनी पड़ेगी कप्तान की भी, जो जानते हैं कि अगर ऑफ स्पिन ऑप्शन हम लाते हैं तो दो धारी तलवार बन जाती है। रन भी जा सकते हैं और उतने ही चांसेस बनते हैं, उतने ही मौके बनते हैं कि मिस टाइम हो गया तो हवा में गेंद उड़ जाएगी, लपक ली जाएगी, विकेट जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। हमने देखा कुछ इसी तरीके से तीसरा विकेट का जो पतन हुआ था। वाइड द्वारा शुरुआत, बाला के द्वारा अपना तीसरा ओवर डालेंगे, और कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है कप्तान द्वारा मैवरिक्स के। जिस तरीके से बॉलिंग लाइनअप, अगर दोनों के दोनों गेंदबाज जो है अगर अच्छे लय में हो तो उनको जरूर देना चाहिए, जितने ओवर आप दे सके ना। बाहरी किनारा माँ के हेलीकॉप्टर शॉट मारना चाहते थे मिड ऑफ के ऊपर से, पर गई कहीं और रीजन में। 4 रन प्राप्त करने में कामयाब। हालांकि जहां मारना चाहते थे वहां तो गई नहीं, पर 4 रनों का इजाफा जरूर होगा कसौली टाइगर्स के टोटल में। लीग स्टेज में दोनों भी टीमों द्वारा बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस देखने मिला था। फिर से उसी क्षेत्र में मारना चाहते थे, पर कहीं भी उसी क्षेत्र में जहां पर वो बिल्कुल भी जाने की कोई भी अपेक्षा नहीं कर रहे थे। 2 चौके प्राप्त हुए और एक के बाद एक प्राप्त हुए, तो रन रेट जो है वो थोड़ा सा 6 के आगे जाता हुआ। 3 विकेट जो है वो गवा चुकी है कसौली टाइगर्स अपने। देखना होगा अभी बाला क्या रणनीति अपनाते हैं। देखिए जो दोनों गेंदें थी वो बुरी तो नहीं थी, पर इस बार गेंद को पटका थोड़ा सा पीछे किया लेंथ को, और जो उछाल जो है वो पूरी तरीके से असमतल रहा है इस एंड से, खास करके क्योंकि इसी एंड से बॉल जो है वो चिन को संदेश देते हुए जा रही है, कानों के पास से जा रही है, आपके सामने से जा रही है पूरा। और वही अगर लेंथ से बॉल घुटने के भी नीचे रह जाए तो मुश्किल हो जाती हवा में। और इस बार देखिए क्या ही मॉन्स्टर सिक्स जिसे हम कहते हैं, उस तरीके से वो मारा गया था, बीचों बीच बल्ले से निकला।
रितेश द्वारा जर्सी नंबर 45। यहां से अभी अगर अपना आगाज जो है वो उन्होंने ऐलान कर दिया है, और अगर रेंज में रही गेंद, थोड़ी भी आगे रही, तो फिर ये चूकने वाले नहीं है बिल्कुल भी। और कीपर अपने जगह से पूरा बॉलर रनअप के यहाँ कुछ बताने के लिए आए हैं। कसौली टाइगर्स खुश होंगे कि देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा देर से मारना चालू हुआ, पर कोई बात नहीं, जितने आए उतने आए अभी यहाँ से। टोटल भी कवर्स के ऊपर से खूबसूरत तरीके से टहलाया बॉल को, सिर्फ दिशा दी, कवर्स के ऊपर से वन बाउंस चौका प्राप्त करने में कामयाब रितेश। जो पहले दो चौके थे वो कन्विंसिंग नहीं लग रहे थे, पर अब जो दो शॉट मारे गए हैं, बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की गई, अक्रॉस जाने की कोशिश नहीं की गई, जिस लाइन में है वो गेंद उसी लाइन में वो उसको खेला गया। फर्म हेड पोजीशन है बल्लेबाज द्वारा। ओ, वाइड बॉल, दिशा से भटके, दबाव में आ गए गेंदबाज जो है। थोड़ा महंगा ओवर साबित होता हुआ ये, मैवरिक्स के नजरिए से देखा जाए तो। जिस तरीके से पावर प्ले चला था, 5 ओवरों में 25 रन गए थे सिर्फ, और 3 विकेट मिले थे। पर रितेश के आने के बाद जिन्होंने 19 रन बनाए 8 गेंदों में, थोड़े रंग रूप बदलते हुए, थोड़ा मिजाज बदलता हुआ। अच्छी गेंद, 6 ओवर के बाद 45, 3 के नुकसान पर दर्शन दड़गांवकर जो है वो पहले ओवर से पिच पर तैनात है। 4 रन बना चुके हैं 9 गेंदों में। और रितेश भी है, भले ही थर्ड डाउन आए हो, और उन्होंने भी 9 गेंदें खेली है, और 19 रन बनाने में वो भी कामयाब हुए हैं। एंड्स भी है जो चेंज हो जाएगी अभी। भाग्य का साथ जो है वो क्या बदलता है, ये भी देखना होगा। कसौली ने जो है वो आखिरी ओवर में दिखा दिया है पावर प्ले के कि बैटिंग डेप्थ जो है वो बहुत ही तगड़ी है उनके पास। अगर रितेश जैसा प्लेयर थर्ड डाउन आपके टीम में आता हो, तो आप समझ सकते हो कि जो बैटिंग पोटेंशियल जो है वो, बैटिंग करने की, बल्लेबाजी करने की काबिलियत जो है हर एक बल्लेबाज के पास, वो सराहना करने लायक है। अथर्व चांदोरकर अपना पहला ओवर डालने के लिए थोड़ा सा समय लेते हुए फील्ड पोजीशन सेट करते, बैकवर्ड स्क्वायर लेग में उन्होंने एक प्लेयर को खड़ा किया है। शॉर्ट थर्ड मैन है, बैकवर्ड पॉइंट है, दूर रखते हैं गेंद, गेंद गेंद को बल्लेबाज के रीच से पाले में नहीं डालते। और इसी बदौलत, इसी वजह से बहुत ही सेलिब्रेटेड गेंदबाज है मैवरिक्स की टीम में और पूरे मौका में। एलएसी के मैच के अगेंस्ट लीग स्टेज में सुपर 8 में उन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी। भले ही वो मैच एलएसी जीत गई थी, पर दिखा दिया था कि किस तरीके से वो क्या काबिलियत रखता है अपने टीम को सिंगल हैंडेडली कमबैक कराने की। लीडिंग गेज लगा, रुकाना होगा। टीपेन जो है वो जैसे जैसे 1 या 2 रन तो रुकाने में कामयाब हुए। बाहरी किनारा जो है वो लगातार शॉर्ट थर्ड मैन का प्लेयर गेंद को पूरी तरीके से बाउंड्री लाइन तक, बाउंड्री रोप तक फॉलो कर गया।
2 रन जो है वो निकालने में कामयाब हुए। फिर से अच्छी फ्लाइट और अच्छी लेंथ, लाइन भी आउटसाइड थी ऑफ स्टंप। चौथे पांचवें स्टंप से अगर गुड लेंथ से गेंद अंदर आती है तो इससे बढ़िया क्या ही कहेंगे आप। उनचास रन बनाकर 3 विकेट का नुकसान कसौली टाइगर्स द्वारा। अतर्व अभी तक नियंत्रित गेंदबाजी करते हुए पाले में थी और इस बार क्लियर कर पाएगी रोप को। स्वीप शॉट, तरकश में से अभी सभी तीर निकलेंगे यहाँ पर। और कसौली टाइगर जो है वो अपना असली परिचय जो है वो देते हुए दिखेंगे, ऐसे तो लग रहा है। मिडिल ओवर में फिर से पाले में है गेंद, पर क्या इस बार कैच होगा? छोड़ दिया, डीप मिड विकेट के क्षेत्र में वो बॉल गई थी। बड़ा विकेट हो सकता था जिस तरीके से खासकर कसौली टाइगर्स हरी को आगे बढ़ा रही है। सीधा है, रफ्तार है गेंद के पीछे, चौका निकल जाएगा। सेफ शॉट जिसे हम कहते हैं। मैं चुप बैठा, सीड भाई भी बोले, मैं बोला एक मौका बना था, एक छक्का गया, एक सीधा शॉट चौके के रूप में। तो अथर्व जो है वो, अगर भले ही उन्होंने लेंथ अच्छी डाली थी पर थोड़ा आगे दे बैठे गेंद को। एक ओवर में 15 रन जो है वो दे चुके हैं अथर्व। थोड़े दबाव में अभी महसूस करेंगे अपने आप को गेंदबाज मैवरिक्स के। थोड़ी उम्मीद की किरण जो है वो जगानी पड़ेगी फिर से। 3 विकेट जो है ऑलरेडी प्राप्त कर चुकी है। पटका गेंद को कवर्स के क्षेत्र में, गेंद जो है वो अच्छी फील्डिंग हुआ कवर्स फील्डर द्वारा। दीपेंद्र शिंदे है नए गेंदबाज। मीडियम पेस गेंदबाजी, थोड़ा पेस में वेरिएशंस करेंगे तो उनको अच्छा खासा नतीजा मिल सकता है। विकेट थोड़ी लेयर, अगर इतनी पीछे वाली गेंद भी इतनी लो रह जाए तो फिर बैट्समैन को शॉट मारने में तकलीफ आती है। और बल्लेबाज अगर मिडिल ना कर पाए गेंद को तो फिर वो चौके तक जाना, अनलेस एंड अनटिल उसके पीछे अगर बहुत ही ताकत ना लगी हो कैरेबियन के बल्लेबाज की तरह, तो चौके तक जाना मुश्किल हो जाता है। शॉर्ट गेंद, वहां पर प्लेयर तैनात है, डीप कवर्स के क्षेत्र में प्लेयर को खड़ा किया गया है। फिर से हवा में और फिर से आसानी से 6 रन प्राप्त करने में कामयाब। दर्शन जो एक समय जूझते हुए दिख रहे थे अपने पारी में, अब
बढ़ चढ़ कर खेल रहे हैं, डोमिनेंस जिसे हम कहते हैं, उनकी पारी में वो दिखता हुआ। सामने से खेलेंगे, बिल्कुल भी पीछे नहीं रहने वाले अभी कसौली टाइगर्स। दीपेन शिंदे, क्या इसका जवाब रहेगा? फिर से बैट को घुमाया, अक्रॉस खेला था मिडिल और लेग की गेंद को। डीप मिड विकेट काउ कॉर्नर के क्षेत्र में गेंद गई थी, सीधा फील्डर के हाथों में। रितेश कदम, 27 रन बना करना आबाद है 24 गेंदों में। फिर से उसी क्षेत्र में खेला, क्या ये कैच होगा? फिर से उसी, कप्तान जो है बहुत खुश है क्योंकि दूसरी बार उस कैच को छोड़ा गया है उसी क्षेत्र में। दो कैचों को छोड़ा गया वहां पर। डीप मिड विकेट और डीप मिड विकेट के प्लेयर के ऊपर थोड़ी सी नाराजगी होगी ऑफ स्पिनर तरव द्वारा और दीपेन द्वारा भी, क्योंकि 2 बार मौका बना था पिछले 2 ओवरों में। चौथा झटका देना बहुत ही महत्वपूर्ण है अभी मैवरिक्स के लिए।
अरे बोल तो है ऑफिस है। ड्रिंक्स ब्रेक होगा 10 ओवरों में। 78 रन देकर 4 विकेट। दस ओवरों के बाद 78, 4 विकेट के नुकसान पर। और एंड जो है वो चेंज होंगे। अथर्व जो है दूसरे एंड से डालेंगे और स्पिन डालेंगे। लेग साइड पर 3 प्लेयर तैनात। थोड़ा लेट खेला, थोड़ा समय लेके खेला। दूसरा रन तो बन रहा था पर जल्दबाजी नहीं की कल्पेश और दर्शन द्वारा। 158 रनों की जरूरत है। फिलहाल का जो रन रेट है वो 7.8 है। 8 के रन रेट से मारने की जरूरत है। और T20 में 8 या 9 जब तक रन रेट है तब तक नियंत्रित लगता है स्कोर। जिस अक्रॉस खेला पर क्या इस बार बिल्कुल भी नहीं, मौका भी नहीं है स्टीव स्क्वायर लेग के प्लेयर द्वारा। अथर्व थोड़ा नाखुश है अपने इस फील्ड सेट से। इस तरीके से फील्ड को सेट किया गया। आ, कसौली टाइगर्स और मैवरिक्स के बीच में ये मैच रंजक रोमांचक मोड़ में जाता हुआ आगे बढ़ा। और सीधा हाथों में, बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे डीप स्क्वायर लेग के प्लेयर।
दर्शन द्वारा जो पारी को एक रफ्तार देने की कोशिश थी, उसमें उसमें थोड़ी सी चूक हो गई और 5वें विकेट का पतन कसौली टाइगर्स द्वारा। जो चीज नहीं चाहते थे वही हो गई और मैवरिक जो चीज चाहते थे वो मिल गई। क्रॉस खेला, विद द स्पिन खेलने की कोशिश की गई दर्शन द्वारा। नए बल्लेबाज जो रहेंगे वो शफीक रहेंगे। दर्शन की पारी को सराहना जा रहा है डगआउट में। यहाँ पर जिस तरीके से वो ओपनिंग में आके एक एंकर का भी रोल अदा किया और फिर जाके उन्होंने पहचाना कि शायद से अभी मोमेंटम शिफ्ट की जरूरत है। पचहत्तर रनों की जरूरत 57 गेंदों में। तो अभी तक तो मामला जो है वो संगीन तो नहीं होते हुए दिख रहा, पर हो जाएगा अगर यहाँ पर एक और विकेट पतन हो गया, एक और विकेट का पतन हो गया कसौली टाइगर्स द्वारा, और मैवरिक्स जो है वो पूरी तरीके से गेम में आ जाएंगे। शफीक शाह नए बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी की कमान संभालते हुए कभी आगे आने पर मजबूर करते हैं, कभी बल्लेबाज को पीछे ढकलते हैं। अथर्व डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन तैनात है, लॉन्ग ऑफ तैनात है। हवे में है गेंद, सिद्धार्थ जो है वो भागते हुए और भागते भागते बहुत ही बढ़िया कैच लपका गया सिद्धार्थ बरोद द्वारा। एथलेटिसिज्म का नमूना, बहुत ही बढ़िया कैच था ये। एक 8-10 मीटर का अंतर जो है वो तय किया गया। आसान नहीं होता जब आप दौड़ते दौड़ते कैच को लपकना चाहते हो, और इतने साफ तरीके से इस कैच को पकड़ा है। शफीक सीधा खेलना चाह रहे थे, पर लॉन्ग ऑन के प्लेयर भी बहुत ही सीधे खड़े थे, इतने भी बाहर नहीं थे वो। एथलीट्स क्या रहते हैं इसका परिचय सिद्धार्थ बरोत ने दे दिया, और आसान नहीं होता। आप बल्लेबाजी के लिए 10 ओवरों से ज्यादा खड़े हो। तो ये मैच कभी कसौली के बाले में झुक रहा है, कभी मैवरिक्स के पक्ष में झुक रहा है। फ्रंट फुट पर खेला मयंक द्वारा, मयंक नए नए बल्लेबाज है, और अथर्व जो कि पहले ओवर में 15 रन दे चुके थे, इस ओवर में 5 ही रन दिए हैं और 2 विकेट प्राप्त करने में कामयाब हुए हैं। इसे कहते हैं कमबैक, और इसे कहते हैं कि आप अपने आप को किस तरीके से गेम में रखते हो। तगड़े मानसिकता का परिचय अथर्व द्वारा। पहले ओवर के बाद नाखुश थे, एक इसी ओवर में एक चौका भी गया। अक्रॉस खेलने का प्रयास था दर्शन द्वारा, और उनकी मांग थी कि वो जो प्लेयर है
छः। इस 75 के बाद, माफ कीजिएगा, 83 रन के बाद 6 विकेट का नुकसान। हिलाया, आगे आने पर मजबूर किया। कल्पेश कोई 2 रन बनाकर वहां पर अभी भी तैनात, पर लय नहीं ढूंढ पाए हैं। जिस तरीके से अभी पारी को आगे बढ़ाना है, उस तरीके से वो आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। और अगर ऐसे ही चलते रहा तो फिर रन रेट जो है वो चढ़ जाएगा, और रन रेट चढ़ने के बाद वाइट बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन, टोटल में इजाफा कसौली के। रनों का सूखा पड़ना नहीं चाहिए आने वाले 9 ओवरों में। कम से कम ओवर में एक बाउंड्री और 2-3 रन, 2-3 रन दौड़ के निकालने चाहिए कसौली को। बहुत ही पीछे डाली थी और फिर से वाइड, लेंथ को खींचा। कल्पेश कोई पावर हिटिंग का भी मानना रखते हैं। में 1 रन, एक रन निकालकर नॉन स्ट्राइक आएंगे। फिर से हवा में थी ये गेंद। सिद्धार्थ परोत, फील्डिंग भी बढ़िया हुई है, गेंदबाजी अभी तक बढ़िया चल रही है, और बल्लेबाजी की तो क्या ही कहने। एक गेंद से पारी को संभाले रखा था शशांक आए। शशांक का मनोबल बहुत ही अलग स्तर पर था जब वो बल्लेबाजी करने आए, और क्यों ना हो, क्योंकि नॉन स्ट्राइक पर जो है वो एक भरोसेमंद बल्लेबाज था। क्रेडिट नहीं छीन रहा मैं शशांक से, पर आपको अगर पता है कि अगर आखिर के 2 ओवर्स है और मेरी भी बल्लेबाजी में ठीक ठाक कर रहा हूँ, सामने वाला भी बल्लेबाज ठीक ठाक है, तो फिर आप अलग मानसिकता से जाते हैं पिच पर। और शशांक ने भी बहुत ही बढ़िया कमबैक कराने में मदद की है, रितेश का जो विकेट जो है वो छटकाने में मदद की है। फुल टॉस, दिशा दिखाई 1 रन के लिए, पर टाइमिंग अगर बढ़िया हो तो फिर ये चौके के लिए जाएगी। जिस तरीके से इस गेंद के पीछे टाइमिंग का अच्छा नमूना देखने मिला हमें, अच्छा परिचय देखने मिला हमें। 4 रन प्राप्त करने में कामयाब आखिरकार कल्पेश। सिद्धार्थ बरोत 2 ओवरों के बाद 12 रन दे चुके हैं, और 91 पर 6 विकेट। अड़तालीस गेंदों में 67 रनों की जरूरत। So only 8 overs are remaining and 67 runs are still needed to be scored by Mavericks. Beg your pardon, by Kasauli Tigers, and Atharva will continue from the same end with the same field set, making sure that it's not allowing too much of room to the batter. Now he just needs to do the basics right, and rest of the things will be taken care of. Is it a wicket? Finally, yes! He was able to fool the batsman with his spin, with his off turning, with his off spin option.
Now into a state of a complete dominance, Mavericks. Big gap between bat and pad, which allowed the ball to spun in and hit the stumps. So even Mayank loses his wicket, and Nihal Gaikwad and Kalpesh Koi will have to make sure that if they want to go to the semis, then this is the pair who can make the things happen for them. And if either of the batsmen is going out cheaply, then it's done and dusted for Kasauli Tigers. And Mavericks will have a ticket into semis. The way this team has played over the course of tournament, over the course of season, is not playing it with the straight bat. He wanted to go. He wanted to start off his innings with a lap shot. Umpire signaled it as a leg bite, was going down the leg side. If by any means it was pitched straighter, it would have been plumped right into the front of three stumps. But the way Atharva bowls, onto the pads, onto the pads and gets a single. Wanted to go big for this shot, but missed. Again wanted to go for a sweep shot. This time again was not allowed, and it is not a way to play or to construct this innings because you have to be aware that only three wickets are remaining. 65 runs are needed in 7 overs. Sid will continue from the same end and two spinning options. Both have similar kind of action, but not exactly similar. But the line and length which both the bowlers are hitting is appreciable, is highly appreciated. And best part about this team is they have each and every bowling options in their inside edge. They wanted to go over the covers, but it went all the way down towards the deep square leg. Pressure has been already mounted and created by Mavericks, and the only thing which can break the shackles for Kasauli is counter attack. If by any means they want to get back into this game, this is the last batting pair which can make it happen for Kasauli Tigers.
Bowling smartly. Siddharth Barot. Again in the air, but this will fell short of the player at long off, who has been exceptional in field today and as well as it's with bowling. They look in no hurry. Maybe they have something in their mind to which bowler they are going to target. Both these batters. Plays onto the front foot. Again a single. Short ball. Will it be called as a wide? Yes, it will. One extra run to add it to the total of Kasauli Tigers. A full toss and rightly delivered so outside the boundary rope, dispatched into a boundary rope. Much welcome boundary for Kasauli Tigers. It will ease off some pressure from the batting team. Not only it will ease off some pressure, but also it will create a ray of hope in a Kasauli Tigers dugout. The shoulders were drooped, shrugged, but the six will certainly bring some change into a mentality. Bit of a delay into a restart. Batsman is taking some time to get refresh. Change of ends, and Shashank will continue from the different end. A good bowling change, I must say. A medium pacer, it will be a difficult to score against medium pacer. Good front foot defense. Into second over of Shashank. Makes him play, forces him to make his legs work, to bring, invited him to play a cover drive.
And this time plays on to the leg side, but there is a protection deep out there. They'll come back for two. No, I think it's a good call. Beg your pardon, it was not played into a leg side, but it was a good looking cover drive. Deep point, deep cover, long off. Oh, kept low again. Keeper is standing well behind. 53 required of 32 balls, and they have 2 overs of Shashank left after this. Maybe two or one. Plays on to there's a protection deep down there. It was a good looking flick shot into a region of deep mid wicket. And this is how they are going to play, I guess. He'll respect just when a room is offered. He wanted to go for a big shot, but there's a protection deep down there at deep extra cover. Sliced. Shashank in his second over gave 3 runs. He looked too good. 15 overs gone, 107 for the loss of 7. A good looking cover drive. This time it has a pace. What exceptional fielding from the player down there at deep covers. He stopped, he saved 2 runs for his team. A thorough throw his body down the line to save couple runs. Sawmill is a new bowler in. This time goes wide. Plays late. As a result, he was not able to time the ball properly. Need someone to lead from the front. Either of the batters. Batter has to take a responsibility for this. Plays onto the back foot, rotates the strike.
भाई 4 overs, लास्ट 44. बॉल में डॉट है, एक रन कौन डाला है? नहीं गिनो ना यार, किधर लिया? ना ना, 3 डॉट गया रे बॉल। हाँ, रन देखना, एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पे। 45 45। So we're into a slog overs. शाबाश टीचर, Swing and a क्या miss बॉलिंग यार! from Nihal. Nihal is trying to go for a big shot. Beg your pardon, it's Kalpesh. He's trying to go for a big, but this is what happens when you are not able to capitalize on each phase of this innings. Right between 7 to 15 overs, they lost the momentum. They were getting the momentum. Like, inside edge, I think it shall race down toward the boundary rope, and there is no player out there. You can't keep players in each and every direction. And inside edge, which adds 4 runs to the total of Kasauli. Shashank is bowling good so far. Wanted to just time the ball so that at least he can get a couple. That's it too. 117, 41 runs needed of 21 balls. I think that's a strategy from both the batters to take the game deep into last 2 overs. Once again wanted to go for big, but Shashank is not allowing any room to. It's not allowing easy runs, easy balls. Again, good smart bowling from the bowler. He's varying his pace. The ball stopped a bit. Then he played a shot early. As a result, 3 dot balls in a row. Good for a team confidence of Mavericks. Manages to get a single run, but that is not going to do. That is not going to prove enough for Kasauli. Good over comes to end. 40 runs needed of last three. Either a guarantee of firecrackers or a disappointment for Kasauli. It has to be, as of now, it has to be a Mavericks game, but you never know what these two batters can bring onto the table. Nihal is playing on 11 of 13. Kalpesh is on 18 of 24 balls. Again wanted to go for big, but Saumil Patel, there is low bounce from this end. So you have to make sure that you play from the back foot and you have to generate the power by standing.
If you have an ability to stand and deliver, it's good. Otherwise, you can't get out of the crease and go for a big shot because the ball is not coming onto the bat easily. This is it. But again, only a single run. This is not going to work for Mavericks. A white ball, a much welcome white ball. They won't mind that. Again, a good ball. Odd ball is odd ball is either getting bounced or either it is getting no bounce at all. It got carried to the keeper easily. He has managed to get a single, but I think unless and until there is an unless and until there is an easy option in a bowling, they are not going to get troubled. Oh, it's a direct hit. Good throw from the player there at the square leg. They are relaxed. Mavericks are looking so relaxed. Their body language has been so positive throughout the field. They are able to sense the victory, smell the victory, opens the face of the bat, but there's a protection out there. So in 2 overs, 35 runs are needed. Only 5 of this over. I think the game has been gone for Kasauli. If they are not going to go for big in this over, it is going to be very difficult for them to score 20 odd runs in the final over. So Shashank will continue. And Shashank came swing and a miss. I think it was a ball which he should have made the most out of it, but I think he has struggled so far. Nihal. He has struggled to find his rhythm, to unsettled, looked unsettled so far. Even though he has played 17 odd balls, 17 balls, but he has not looked convincing. Finally, a convincing looking shot over the covers. This was a shot which he was looking for. There is a difference between how he has played in last 2 or 3 overs and this shot. He has played it into a direction of the ball, with the line. He didn't try to go across. He didn't try much hard. If you keep on trying harder, you're prone to give away easy dot balls. Again goes across, but this time there is a protection down there. This was rightly played so because as the ball was pitching in middle or leg, so when a ball is pitched outside the off stump, that is onto the fourth or fifth stump, you ought to play into a direction of the ball. You can't play shots across because if you keep on playing the shots across, one or two might get connected, but rest of the time it becomes very difficult for a batter. In the air for a while, there's a player down there. No, it was in the air for a while. That's a dropped catch. Is it going out to be costly? Dismiss. Mavericks seem so relaxed because 27 runs are needed, and we have seen how it is difficult to clear the boundary rope if you are hitting straight down the ground. If you are hitting a square boundaries, it is understandable.
But if you're going for a straight hit into a V, then no, it is not going to be an easy task. Again a six, but no, 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 beg your pardon. A boundary. He plays along with the line, and as a result, he gets the same result which he got 2 balls ago. Sawmill. चल जाएगा पक्का देगा तू जाएगा 23 runs of 7. What is going to be there on this ball? Open the face of the bat. And finally manages to get the boundary. 19 runs will be needed of his last over. 19 गेम होनी चाहिए 16 came off of this over. So last over, 19 runs needed. Will be the bowler? Is a question. Sawmill will bowl the last over. So a good looking competition here out there in the final over. Single run, which allows Nihal to get back on strike. He looked so promising in his last 3 or 4 deliveries. 18 runs needed. Okay, and swing and a miss. Sawmill is making life difficult for Nihal. A white ball. Not for a weak-hearted patience. This game, 17 runs needed of 4. Oh, there was an opportunity at a square leg. Finally, they were able to get back in time. Completed a couple of runs. 15 runs needed of 3 balls. They're making some time. They're taking some time to set the field. This delivery, 14 of 3 balls. A nail-biting finish. It's off the cards now. One hit and they'll be right back into this game. Kasauli. Plays smartly. He knows where the fielders are being placed. 10 of 2 balls. This tournament is heating up right now. First quarterfinals in the day. And everyone is so tense in both the dugouts. But at the same time, there's a good display of spirit from both the ends. They're enjoying their game. Laughter has been exchanged. One dot ball will do the job for Mavericks. And one hit
will certainly make the Kasauli Tigers a good. Finally, a dot ball, and that's a celebration from Sawmill. A ticket into a semi-final for Mavericks, unless and until Mavericks Sawmill don't bowl or no ball. This team is into a semi-final. Congratulations, Mavericks! An exceptional batting display by few of the batters from both the end. It was not a high-scoring game, but it made sure that both the sides have their share of luck into this game. We'll be back into a second semi-final of this game of this day, a second quarter final of this day. Till that time, stay tuned.